Hello everyone. In this video, we'll discuss about another important topic from the concepts of digital electronics, which is called as logic gates. The outline of this video will be we'll discuss about logic gates, its types, and the way the behaves. This is going to be a part of our today's segment. So let us start with logic gates. Logic gates are the fundamental blocks of digital circuits. That means they are the basic elements to design the digital circuits. The name logic is derived from the fact that it can make decision or it can take decision. That is, it produces one output for some input combination and maybe another output for different combination. So as it takes logical decision, we can call this as a logic gate. Now we are having three types of logic gates. The first category is called as a basic gate. The second one are called as the universal gates, and the third category is called as special gates. So we'll start with the first category of gates, which we call it as the basic gates. Here it is, basic gates, and in that we have three types. One is AND gate, OR gate and NOT gate. गेट्स किसी भी डिजिटल सर्किट का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, यानी कि उसे डिज़ाइन करने के लिए अगर किसी भी सर्किट को हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वी नीड द गेट्स. So let us start with the first category as AND gate, and in that we'll see two input AND gate. Sure, first the mathematical expression for AND gate will be output Y will be product multiplication of two inputs A and B. So this will be its mathematical representation. Now when I come at its symbolic representation, we have a symbol like this with two inputs A, B and the output as Y. So this is mathematical and this is symbolic representation of AND gate. I will come across the third important parameter from any gate, which is called as truth table. हमने पिछले लेक्चर में ट्रूथ टेबल किस तरह से डिराइव करते हैं या फिर हम उसको किस तरह से नोट कर सकते हैं, ये हमने देखा था. एंड इन दैट लेक्चर वी हैव सीन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट लिया है. इनपुट इज ए पी एंड वी हैव द आउटपुट टर्म एज वाई. अब हमारे पास दो इनपुट्स है तो उसके चार कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, नेमली 0 0 0 1 1 0 1 1. Now we'll generate the output as y. Let us start with the first combination. 0 into 0 will be 0, 0 into 1 will be 0, 1 into 0 will be 0 and 1 into 1 will be 1. So this will be the truth table for AND gate. अब इससे हम कुछ लॉजिक डिराइव कर सकते हैं. वो लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट थ्री कॉम्बिनेशन का आउटपुट 0 है. यू कैन सी इट हियर 0 0 0. नाउ व्हेन आई कम अक्रॉस इट्स इनपुट कॉम्बिनेशन, तो मैं देखता हूँ फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन में दो इनपुट्स 0 है, सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन में एक इनपुट 0 है, थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन में भी एक इनपुट 0 है. सो उससे हम एक लॉजिक डिराइव कर सकते हैं, दैट इज इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द इनपुट ऑफ AND गेट इज 0, definitely its output will be 0. Important logic, what is it? If any of the input for the logic AND gate is 0, its output will be 0. अब किसी भी AND गेट के अक्रॉस अगर हम 100 गेट्स कनेक्ट करते हैं तो उसे पूरा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. विल सी वेदर वी आर हैविंग एनी ऑफ द इनपुट इज 0. अगर एक भी इनपुट 0 आता है तो डेफिनेटली इसका आउटपुट आ जाएगा 0. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AND गेट. Second category will go for OR gate, again for two inputs with mathematical term as y is equal to a plus b. So for OR gate we'll use that term as adder, a plus b. This is its symbolic representation. And now coming to the point of truth table, again we'll take that input a b and output is y. Four combination as it is 0 0 0 1 1 0 1 1. Now we'll simply add them. First combination 0 plus 0 will be 0, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 0 will be 1 and finally 1 plus 1 will be 1. So this will be the shortest truth table of a two input OR gate. अब इससे भी कुछ लॉजिक हम डिराइव कर सकते हैं. लेट अस सी. अगर हम आउटपुट कॉम्बिनेशन देखते हैं, सो वी आर हैविंग आउटपुट एज 1 फॉर 3 कॉम्बिनेशंस. 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए 1 और 1 1 के लिए 1. फाइन. सो इससे अगर हम देखते हैं तो सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन में एक इनपुट 1 है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक इनपुट 1 है और यहाँ तो दोनों इनपुट 1 1 है. इससे हम एक लॉजिक तो डिराइव कर सकते हैं, दैट मीन्स
if any of the input, you can see it here, if any one of the input is 1, कम से कम अगर एक इनपुट 1 आता है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव रिटन हियर, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1, देन आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 1, देन आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 1. एंड गेट का कैसा था, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट 0 था, और यहाँ पर इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 है तो आउटपुट आ जाएगा 1. सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी कॉल्ड एज द OR गेट. Now we have third type from the basic gate is called as the NOT gate. NOT gate is also called as the inverter. It is also called as inverter. Basically, it is having a single input and a single output. So let's suppose we have input as A. I'm writing input is A. So I can write for this particular term first the expression आउटपुट y विल बी इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट या फिर हम लिख सकते हैं a बार. सो y इज इक्वल टू a बार. दिस इज द फर्स्ट टर्म. सेकंड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सो वी हैव टू ड्रॉ ए ट्रायंगल लाइक दिस विथ ए बबल. यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इनपुट a, तो ये हो जाएगा a बार. सो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट. नाउ थर्ड पॉइंट, ट्रूथ टेबल. इसको हम लिखेंगे tt, truth table. Now we are having a single input as A and output as Y. So based on that we can derive its truth table. अब देखिए हमारे पास सिंगल इनपुट A है तो उसके मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. एक तो A का वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर 1. फाइन. नाउ व्हेन आई कनेक्ट 0 हियर, 0's complement will be 1, and if I connect 1 here, 1's complement will be 0. So this will be the truth table for NOT gate. One of the simplest gate we can call it as the NOT gate, or it works as an inverter. 0 का 1 करेगा, 1 का 0 करेगा. So this is about the basic gates. Now we'll move on to the second category of gates, which is nothing but our universal gate. Now as far as universal gates are considered, we have two types. One is called as a NAND gate, one is called as the NOR gate. So first I am writing it here. The first category is nothing but NAND gate. What is NAND gate? NAND gate is basically a combination of two basic gates, one AND gate and one NOT gate. That means if I connect an AND gate with NOT gate, this combination is called as the NAND gate. Fine. So for that case, again let us assume that we have two input for NAND gate and a single output. So I'm writing it here. Let's suppose the inputs are A and B. तो सबसे पहले लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन. आउटपुट y विल बी इक्वल टू, एंड के लिए आ जाएगा a इंटू बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट से होता है. सो a इंटू बी होल बार विल बी फॉर NAND गेट. सेकेंड टर्म, इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सो अगेन विल ड्रॉ वन AND गेट और उसके साथ एक बबल नॉट गेट का, एंड आर इनपुट टर्म्स A, B, and this is output Y. So this becomes its symbolic representation. Now coming to the third point is our truth table. In case of truth table, we have two inputs A, B, and a single output as Y. So 2 input means 4 combinations. Again the same approach like this one. Now let us start with the first combination, 0 0. Now if I put 0 0 here, if it is an AND gate, इसका आउटपुट आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर एक बबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. सो 0 0 का आउटपुट आ जाएगा 1. सेकेंड कॉम्बिनेशन 0 इंटू 1, AND गेट का आउटपुट आ जाएगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1. 1 0, AND गेट का आउटपुट 0, उसे हमें कनेक्ट करना है नॉट गेट से. सो 0 का आउटपुट आ जाएगा 1. फाइनली 1 1 विल गेट आउटपुट 1, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 0. सो द आउटपुट्स विल बी व्हाट, 1 1 1 एंड 0. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट. सिंपली AND गेट का जो आउटपुट है उसे हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अब आते हैं लॉजिक के लिए, दैट व्हाट लॉजिक वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म्स. सो आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशंस द आउटपुट इज 1.
तीनों कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दोनों इनपुट 0 है, सेकंड में एक सिंगल इनपुट 0 है, थर्ड में भी एक इनपुट 0 है। सो इससे हम एक लॉजिक डिराइव कर सकते हैं, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट, एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी। सो आई एम राइटिंग इट हियर NAND गेट के लिए, इफ एनी वन ऑफ इनपुट is 0, output becomes 1, आउटपुट बिकम्स 1। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है NAND गेट के लिए, अगर कोई भी एक इनपुट 0 आता है तो उसका आउटपुट हो जाएगा 1। सो दिस इज अबाउट आवर NAND गेट। अब आते हैं उसके काउंटर पार्ट के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट विल बी NOR। नाउ व्हाट इज NOR गेट? So it will be a combination of OR gate with NOT gate. So we'll write simply OR plus NOT gate का combination को हम NOR gate कह सकते हैं। Simple terms again, first its expression I'm writing it here। OR gate के लिए A plus B उसका complement, so it becomes A plus B whole power। Second term symbolic representation, अब OR और NOT का combination है तो ले सकते हैं हम। फर्स्ट विल ड्रॉ OR गेट, इसके साथ एक बबल NOT गेट के लिए, इट इज AB एंड आउटपुट एज Y। हो गया। थर्ड ट्रूथ टेबल विद द सेम फॉर्म, AB इनपुट और आउटपुट को हम ले सकते हैं Y विद द कॉम्बिनेशंस एज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। फाइन सर, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ऐड कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट लेना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 प्लस 0, आउटपुट विल बी 0, लेकिन उसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1। नेक्स्ट 0 प्लस 1, आउटपुट विल बी 1, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0। 1 प्लस 0 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, एंड फाइनली 1 प्लस 1 भी 1 आता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। सो विल गेट द आउटपुट टर्म्स एज 1 0 0 0। ओके, सो दिस इज अबाउट NOR गेट। अब हम कंक्लूजन लिखते हैं, व्हाट विल बी द कंक्लूडिंग पॉइंट और लॉजिक। अब देखिए, लॉजिक लिखने के लिए अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन ऐसे है जहाँ पर आउटपुट आपका 0 आ जाएगा, और उस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज़ 1, मिनिमम एक इनपुट 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, द आउटपुट ऑफ NOR गेट इज़ 0 इफ़ any one input is 1, if any one input is 1। So logically we can write, if any one input is 1, output becomes 0, output becomes 0। So this is a property of, we can call it a property of the NOR gate। I hope you are getting those points about universal gate, why NAND gate and NOR gate। Now coming to the point why they are called as universal gate, because we can realize any gates, यानी कि हम NAND gate NOR gate का यूज़ करके बेसिक गेट भी डिराइव कर सकते हैं, स्पेशल गेट्स भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल सर्किट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट। ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम रियलाइज़ कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यूनिवर्सल गेट्स आर 2 टाइप्स, NAND gate and NOR gate। Now coming to the last category of gates, which is called as spatial gates। So we are having 2 types of spatial gate, one is called as XOR and the other one is called as XNOR gate। Let us concentrate on the first one as XOR gate। Again we'll put it with 2 inputs as A B। So the expression could be Y is equal to A XOR with B। How can write? A circle with plus is called as XOR gate। So Y is equal to A XOR B। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so we can write this as A B bar plus A bar into B। It is going to be the expanded term, A into B bar plus A bar into B bar। So this is the mathematical expression for XOR gate। Second term will go for its symbolic representation। So I have to go for symbolic representation like this। You can see it here, an OR gate with some curved surface like this and taking with 2 inputs,
as A, B. This could be the output as Y. So this will be the symbolic representation for XOR gate. Now coming across third point, truth table. Let us take the input as A, B, output as Y. Again we have 4 combinations with 0 0 0 1 1 0 1 1. Now how can we generate the result? So whenever both the inputs are 0 0, its output will be 0. When the inputs are different, 0 1, output will be 1. 1 0 इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, एंड 1 1 के लिए आउटपुट आ जाएगा 0. हाउ कैन वी रियलाइज दिस? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट 0, एंड व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट विल बी 1. दिस विल बी द ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट. ये अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते हैं ना, ए बी बार प्लस ए बार बी में, सो विल गेट द सेम रिजल्ट 0 1 1 0. लेकिन कैसे ध्यान में रखेंगे? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट 0 आ जाएगा, और अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट आ जाएगा 1. अब देखिए, XOR गेट को हम कंपैरेटर भी बोल सकते हैं. यू कैन कॉल इट एज ए कंपैरेटर. व्हाई? बिकॉज इट कंपेयर्स. देखिए 0 0 कंपेयर हो रहा है, 0 1 कंपेयर हो रहा है. अगर दोनों इनपुट सेम है, यानी कि दोनों इनपुट इक्वल है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0. सो कंपेयर कर रहा है. 0 1 अगेन कंपेयर कर रहा है ग्रेटर और लेस के लिए. अगर वो दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ XOR गेट. फाइन. सो नेक्स्ट is going to be our XNOR gate. XNOR gate will be the complementary और a complement of what XOR gate. उसका complement हो जाएगा XNOR gate. So सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे y is equal to a सर्कल विथ प्रोडक्ट इंटू b. देखिए OR गेट के लिए प्लस आया था, XNOR के लिए आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन. सो इसका कॉम्प्लीमेंट. और एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिखेंगे ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार, ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार. सेकेंडली लिखेंगे हम इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन. देखिए मैं XOR गेट ड्रॉ कर रहा हूँ, और XOR गेट को खाली हम कनेक्ट करेंगे एक बबल, ए बबल ओवर हियर, एंड लेट अस कनेक्ट विद द इनपुट्स एज ए बी. ये हो जाएगा आउटपुट एज वाई. एंड लास्टली हम जाते हैं उसके ट्रुथ टेबल के लिए. थर्ड स्टेप, ट्रुथ टेबल. अब ट्रुथ टेबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा हमारा XOR गेट के लिए, यानी कि जो भी XOR गेट का इन आउटपुट था उसका कॉम्प्लीमेंट. देखिए XOR गेट 0 0 के लिए 0 था, 0 0 के लिए आ जाएगा 1, 0 1 के लिए 1 था, ये आ जाएगा 0, 1 0 के लिए 1 था, ये आ जाएगा 0, और 1 1 के लिए आ जाएगा 1. दिस इज इट्स ट्रुथ टेबल. अब इसको किस तरह से कॉल करेंगे? इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज 1, and if the inputs are different, output will be 0. So this is how we can go for special gates as XOR gate and XNOR gate. I hope you understood this concept. इसमें सबसे important part है वो कि properties. AND गेट का प्रॉपर्टी हो जाएगा, OR गेट का हो जाएगा, XOR गेट का भी. अगर इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 आता है, सेम है तो 0 आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेट्स जो हमें पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लगने वाले हैं. So I hope you understood this concept. Thank you.